Hi guys, welcome back to the Voice of Victory podcast, episode number 2. This is BGMI edition. I'm your host Monk. I'm joined by two very special people in the BGMI community. I'm pleased to welcome Aurum, our coach at Team Vitality India. Hi, how are you? I'm good. I'm good. Arav, how are you? Very good, very good. बस आपके इंतजार में थे. And also, classy भाई, Nitin भाई, welcome to this Yeah, podcast. hi, hi, hi. How How are are you you? doing? I'm fine, I'm वेरी fine. गुड. कल ही Yeah, तो परसों ही तो बात हुई थी हमारी. 1 घंटा हमने क्या बातें की. आई yes. आई होप सबने वो देखी है. स्ट्रीम नहीं देखी तो वो जाके देख लेना इससे पहले. आज हम Yeah. बात करने वाले हैं primarily about BGMI. Both of you are very big in the BGMI community. You're very big in the industry. You've been in this game for a long time. And आज आप मेरे को थोड़ा ज्ञान दे देना BGMI के बारे में. मैं भी थोड़ा सीखूंगा आप दोनों से. बट बिफोर गेटिंग इनटू BGMI मेरे को थोड़ा आप दोनों से बात करनी है. मेरी बहुत टाइम से कैचिंग अप नहीं हुई है दोनों के साथ. तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में आजकल? क्या कर रहे हो? मेरा तो सेम चलता रहता है. यूट्यूब चल रहा है, फिर अभी मैं थोड़ा फेसबुक पे भी फोकस किया है. फेसबुक चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन चल रहा है बेसिकली. अभी सोच रहा हूँ कुछ और चीज़ों में एक्सप्लोर करने के लिए. अच्छा. बाकी वाइटैलिटी के लिए तो कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल तो चल ही रहा है. एंड काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी आने वाली है. तो जस्ट वेट फॉर दैट. थोड़ा लेट हो रहा है बट वेट फॉर इट. या आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर इट. एंड प्रतीक भाई, आप आपके जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो अभी नॉर्मली है. मतलब आई एम जस्ट यू नो वेटिंग टू गेट बैक इनटू द कॉम्पिटिटिव सीन. अभी आई एम Yeah. राइट नाउ आई एम जस्ट लाइक अ स्पेक्टेटर जो बाहर से ऑब्जर्विंग कर रहा है बैठ के. सारे इवेंट जितने भी हो रहे हैं, चाहे ऑफिशियल अनऑफिशियल जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, तो वो अभी फिलहाल के लिए आई एम जस्ट sitting on my couch and enjoying those events as a spectator. But yes, I'm very much excited to come back and compete once again. So I'm just looking forward to it. A very smart Yep, spectator is absolutely. waiting. Not only I would say not only spectating, but हाँ, साथ में वो अपना analyzing का जो वो हाँ, वो चलता तो रहता है. चलता ही है हाँ, जब इतना. हाँ, हमें या इतना, ये तो मैं अग्री करता हूँ. जब एक गेम के बारे में आप एक सर्टेन तरीके से सोचने लग जाते absolutely. हो, तो उसके बाद नो मैटर व्हेन यू वॉच इट, हाउ यू वॉच इट, व्हेनेवर यू वाचिंग इट, यू आर ऑलवेज Yes. थिंकिंग अबाउट कि यहाँ पे ये हो सकता था या वहाँ पे वो हो And सकता I था एंड know, ऑल I mean, दैट. you can also बट relate to that. That is very natural because जब आप इतना या खेल लेते हो एक गेम को, तो आप वो एक नॉर्मल स्पेक्टेटर जैसा आप देख ही नहीं सकते हो उसको. तो यू स्टार्ट 100%. इन्वॉल्विंग योर ओन नॉलेज टू दैट कि अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो है एंड इसमें अगर मैं होता या मेरी टीम होती, तो हाउ वी वुड बी डूइंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग. या तो या राइट. तो वो 100%. आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है. उससे चाहे मैं डायरेक्टली compete नहीं कर रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एज वेल. तो आई थिंक that's also very important. True. And I think that tells you that you're a natural person at this. When you just watch a match and then you completely understanding ki what these teams are doing, how you could have done it better, and all that. Wo automatically you understand that, oh, I was actually made to do something like this. That's a very big Absolutely. sign. But getting into this, BGMI just celebrated their first year anniversary, and Classy Bhai, what do you have to say about that? How was Yeah, it? like it was good actually. The first year was pretty amazing क्योंकि 2 जुलाई को आई थी गेम पिछले साल. तो हाँ काफ़ी जी. जल्दी 1 साल हो गया. एंड 1 साल में जैसे गेम पहले लॉन्च हुई थी, तो 1 साल में काफ़ी लाइक ऊपर भी चली गई है गेम. क्योंकि प्लेयर बेस वाइज भी सोचो तो अभी रिसेंटली दे हैव कंप्लीटेड 100 मिलियन डाउनलोड्स. तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर या फिर द मोस्ट पॉपुलर बैटल रॉयल गेम्स इन And a lot इंडिया. of people did not expect that, right? Ki when BGMI will come back, it'll be on या that same level. But actually, looking at it now, it's gone to a completely different level altogether. It's actually या still growing. Yeah, it's Everybody's still enjoying the going. game. अभी भी चल रहा है. So I'm expecting it to grow a lot more than this because क्राफ्टन ने भी काफी कुछ बिल्ड किया है. The esports ecosystem काफी अच्छा बिल्ड Yeah, कर yeah. है. हाँ, Yeah, वो तो that's सब there. सब And देख रहे हैं उसको. yeah, and since this is a battle royale game made for India, तो काफी कुछ इंडिया सेंट्रिक like events, themes काफी कुछ गेम में आते भी रहता है. एंड इफ यू रिमेम्बर लाइक लास्ट ईयर इनका एक कैंपेन भी आया था, गेम रिस्पॉन्सिबली. तो उसमें हाँ जी. लाइक दे वांट टू प्रमोट दी हेल्दी गेमिंग हैबिट्स. लाइक ऐसा नहीं है कि गेम खेलते रहना है घंटों घंटों. सो यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ आल्सो. तो उसमें क्या है, टेक अ ब्रेक एंड ऑल दोज. दैट कैंपेन वाज प्रीटी गुड. तो प्लेयर बेस को भी रिमाइंड करने के लिए ना कि Yeah. ऐसा नहीं है कि 20 घंटा ही गेम खेल लो. सो दैट वाज आल्सो प्रीटी गुड. सो अच्छा है, गेम इज डूइंग प्रीटी वेल. एंड आई एम श्योर आने वाले समय में इट विल
दूर Yeah, तक। it's actually the first game that's been properly curated for the Indian market altogether. मतलब या ऐसा कभी किसी ने the way that they've paid attention to India, how the habits and everything, nobody else has the same या way. And I दैट्स think a lot of the success behind the game is because of that, because of यस the fact that they've made it for the Indian market. But यस also talking more about the game, BGMI has always had hacking problems. That's something that's they've carried. मतलब मैंने जितना अभी तक जितनी भी मोबाइल गेम्स है आई थिंक सबसे ज्यादा इश्यूज और ऑब्वियसली अब गेम भी बिगेस्ट है तो होता भी कुछ है तो सबसे बड़ा इशू बनेगा ही उसमें बट व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट दैट नाउ इट्स बिन इट्स 2022 every single game developer is working on not having any hacking problems in their games so if it's still happening in a game that's so big obviously it leads to problems right या सो दैट्स ट्रू, गेम प्ले एक्सपीरियंस भी वो तो है। खराब हो जाता है नहीं, काफी। अगर आप मतलब ई स्पोर्ट्स के या पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है इसका ई स्पोर्ट्स पे, बिकॉज इट कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ डैमेज एंड इवेंचुअली अफेक्ट अ लॉट ऑफ करियर्स। जो लोग आई मीन जो अभी फ्रेश टैलेंट जो अपने टीयर वन जिसे हम कहते हैं आज की डेट में, अगर वो उस लीग में एंट्री करना चाहता है एंड खेलना चाहता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। एंड आई थिंक हाँ जी उस टैलेंट obviously का इस लीग में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रेश टैलेंट्स नहीं आते जाएंगे तो कंपटीशन एक लेवल के बाद वो रुक जाएगा, और अगर वैसा या होता है तो वो पूरे इकोसिस्टम के लिए खराब है। एंड ई खराब है। स्पोर्ट्स में आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्लासिक गेम्स, तो मैं उतने नहीं खेलता। आई थिंक क्लासी भाई उस पर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। बट ई स्पोर्ट्स में स्पेशली जो हमारा टूर्नामेंट्स होते हैं, वी डोंट कॉल इट हैकिंग, एक्चुअली वी कॉल इट चीटिंग। तो हैकिंग तो फिर भी चीटिंग या yeah इट्स अ गुड या वर्ड, वी कॉल इट या चीटिंग। एंड I mean, we have seen a lot चीटिंग of allegation videos put up by many players and teams on YouTube and their Instagram handles during some of the official and unofficial events. Although we have like recent recent events events, although we have full faith in the conduct of the management of these events, but unfortunately, these allegations in such instances can be seen till date. तो वो I think एक थोड़ा problematic part है। And I mean, Krafton has also done a good job by introducing BAC, that is your Battlegrounds anti-cheat system, recently, and I believe that it will help to prevent the rise of such cheating cases. बट एज फार एज आई नो, क्योंकि जितना भी इसके ऊपर वीडियोस बनते हैं एंड जितने भी चैनल्स इन सब चीज़ों को कवर करते हैं, उससे जितना मुझे समझ में आया वो ये है कि देर आर सम चीट्स इन द मार्केट दैट आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, डिटेक्ट and डिटेक्ट या they are being sold in the underground market, and I don't know where yeah and how those things are done, but it's being done. So I think Crafton have to take very strong steps against all the people who are doing this, and even if they can't do that, they should try and eliminate such instances, चाहे वो गेम में बैन करे, इन गेम बैन करे, या हाँ they do it through the tournament या organizers, but they have to take a very strong step, as they are the developers and they have a very very big say in all of this. So yeah I yeah या no राइट fair play is 100% the number one priority in esports. Like that is point 101 ki wo sabse pehle hota hai before an ecosystem can even be built. So बिल्ट esports side पे तो of course cheating or anything can have massive issues. But even looking at it from a casual perspective, क्लासी भाई अगर आप like एक मैच में जाते हो आप बस अपने दोस्तों के साथ खेलते हो और उसमें भी अगर you face a cheater or you face someone like that, it is a huge problem, right, to deal with it. या इट इज बिकॉज लास्ट ईयर की बात है व्हेन द गेम वॉज लॉन्च्ड, तो 3-4 महीने ना पहले बहुत ज्यादा चीटर्स आ गए थे गेम के अंदर, लाइक इट वाज लिटरली अनप्लेएबल। मैं खुद बता रहा हूँ, लाइक आई यूज्ड टू लैंड समवेयर एंड पहली गन पिक करने के पहले somebody has already killed me, I don't know how, from where, ऐसे तो इट वाज प्रीटी फ्रस्ट्रेटिंग। तो तब तो काफी लोगों ने खेलने से ब्रेक ले लिया था, बहुत लोग ने खेलना बंद कर दिया था, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे एक कैजुअल गेमर जैसे है तो फन के लिए खेल रहा है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए खेल रहा है, एंड देन ही स्पेंड्स हिज टाइम, एंड देन एंड ऑफ द डे अगर ऐसा होता है तो फिर इट्स फ्रस्ट्रेटिंग एंड वेस्ट ऑफ टाइम भी Yeah. है। हाँ, तो उसके बाद द क्राफ्टन ने काफी अच्छे स्टेप्स तो लिए हैं, लाइक इफ यू प्ले द गेम नाउ, लाइक काफी महीने से तो जो एकदम हेवी बहुत ज्यादा चीटिंग था वो तो कम हो गया है, बट अभी क्या होता है, हाँ whenever there is a new update, updates generally come every 2 months in the game. तो जब अपडेट आता है ना, तो इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अपडेट देर आर
फ्यू चीटर्स देखोगे आप, इफ यू प्ले 3-4 क्लासिक मैचेस, उसमें से एक आध में मिल जाएगा, एक दो मैच में हाँ मिल जाएगा, बट दे टेक द एक्शन, लाइक जब अपडेट आता है ना, तो देर आर न्यू बग्स जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो ये चीट्स बनाते हैं, हुअर मेक्स हाँ इट, हाँ हाँ तो दे हैव टू लाइक फाइंड आउट, एंड देन उसको वो लोग करते हैं उसके ऊपर एक्शन। तो उसके बाद यू सी आफ्टर वन वीक ऑफ द अपडेट, इफ यू रिपोर्टेड सम गाइज, यू विल सी कि वो बैन हो गया, एंड देन मैचेस में आते भी नहीं, लाइक इट विल बी वेरी रेयर, लाइक 50 मैच में एक आध दूसरा मिल गया ऐसे। हाँ तो उसके हाँ ऊपर काफी अच्छा उन्होंने लाइक किया है, बिकॉज इवन क्राफ्टन भी कहता है कि फेयर प्ले इज देयर प्रायोरिटी, तो दे हैव टेकन They द also स्टेप्स release this yeah. रिगार्ड्स। ban list in game. या बैन लिस्ट वेबसाइट Oh पे भी करते हैं, हाउ मेनी चीटर्स, बिकॉज देयर आर लैक्स ऑफ, पहले तो कितने लैक्स में बैन किए थे लास्ट ईयर, अभी तो कम हो गए बिकॉज उतने आ नहीं पाते हैं। एंड सेकेंडली लाइक क्या होता है, व्हेन द गेम इज ऑन एम्यूलेटर, आई हर्ड दैट दी चीट्स आर मेड ऑन एम्यूलेटर्स। या तो 100% मोबाइल तो वो क्रैक करना बहुत मुश्किल तो होता है वैसे ही। बीजीएमआई का ऐसे ऑफिशियल एम्यूलेटर तो कुछ है नहीं, बट पीपल एंड्रॉइड पे वो एम्यूलेट करके फिर वो कर लेते हैं एम्यूलेटर पे, एंड दे मेक दी चीट्स एंड ऑल। या तो लाइक व्हाट आई हर्ड, दे हैव दिस अदर गेम, क्राफ्टन का गेम है ना, न्यू स्टेट मोबाइल, सो वहां पे उसके लिए कोई ऑफिशियल एम्यूलेटर नहीं है, एंड दे डोंट इवन प्लान, बिकॉज चीटिंग कर हाँ करने के लिए है उनका। हाँ तो Actually, मुझे हाँ, तो लगता आई है कि थिंक ये जो भी cheating है, it is directly proportional to its popularity, a game's title's popularity. जितना या ज़्यादा popular या होगा, या या उतना हंड्रेड ज़्यादा परसेंट ये आपको देखने को मिलेगा। तो PUBG New State, या वी सॉ इट बिकॉज विद वॉर्जन ऑल्सो बिकॉज द एज यू सेम सेड, थिंग देयर अ मार्केट, ब्लैक मार्केट में चीट्स बेच रहे हैं, तो कस्टमर बेस है उसके लिए, जितना गेम पॉपुलर होगा, पीपल विल गो एंड बाय दी चीट्स, काफी या एक्सपेंसिव, जैसे अगर ऐसी कोई चीट्स बना रहे हैं जो डिटेक्टेबल नहीं है, तो उसके लिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे, सो दैट्स अ मार्केट फॉर दैट। तो But it's good that Krafton at least is working on the esports side because, like Aurum bhai said, there's already an app that helps you yes, in the professional scene. But at the same time, they're working on something for the normal players as well. And obviously, this is facts. Ki, matlab, Warzone when it came out had so many cheaters at one point that people stopped playing that game as well. So it is yes, something that's there. Ki as soon as a game becomes popular, all of these things just add up. absolutely. और ये yes, बढ़ता रहता है तो होपफुली इट गेट्स सॉर्टेड आउट सून आई मीन वी ऑल वांट फेयर प्ले एंड एक चीज मैं वैसे भी लोगों को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो चीटिंग करता है या कुछ भी बोलता है तो प्लीज जाके उसको समझा दो कि ये ठीक नहीं है और दूसरे लोगों के लिए बहुत वो तो प्रॉब्लम है। होती है इससे हमें बस बैठ के गेम खेलनी है I mean, I would just like to tell you that official events में तो I already told you that there is this app called BAC, but unofficial में there are a lot of या steps that the organizers are taking these days to curb all of these things. जैसे they yeah, are या yeah, जैसे दैट्स ग्रेट suppose they an event is happening, unofficial की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें they'll ask for proper hand cam recorded, or they may tell you to just record your full I mean yourself with your full posture, with your face also, that uh, you may not be involved in a case of ringing ओ कि आपने register किया है but खेल कोई और रहा है, तो with face somebody and else then is playing, with yeah, yeah, screen yeah, also. yeah, इम्पर्सनेशन And हाँ then there is one more technique where they tell you to open your game from your play store or app store, या respectively, like अगर आप एंड्रॉइड पे हो तो प्ले स्टोर, और उस yeah, पे yeah, iOS yeah, पे देन yeah, योर ऐप yeah, स्टोर। तो these kind of things are happening, and one more thing, because अभी 2 साल से we were experiencing COVID, तो उसकी वजह से there were no LAN events happening, but now we have seen या a couple of LAN events for BGMI also recently, and yes, उनकी वजह yes, से आई थिंक लैन इवेंट्स एक ऐसी चीज है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी 100% ऑल नो लैन पे yes, चीट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देयर इज एन एडमिन स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू, जो आपकी स्क्रीन को, आपके हर एक्टिविटी को एक अच्छे तरीके से वॉच करता है, एंड ही कीप्स एन आई ऑन यू ऑल द टाइम। देन वन मोर थिंग विच आई थिंक द ऑर्गेनाइजर्स कैन डू, और द स्पॉन्सर्स, लाइक बिकॉज इस सारे लैन इवेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो स्पॉन्सर्स जो होते हैं दे प्रोवाइड देयर ओन डिवाइसेस। सपोज इफ इट्स या मोबाइल मोबाइल ब्रांड, hmm, तो वो मोबाइल ब्रांड अपना डिवाइस प्रोवाइड कर देगा जिसका भी वो device दे देगा, प्रमोट कर yeah, रहा है जिस डिवाइस को। yeah, तो उस डिवाइस पे आप खेलोगे तो यू आर हैंडेड दैट पर्टिकुलर डिवाइस एट दैट पर्टिकुलर लैन इवेंट। तो उसमें उतनी जल्दी उतने चेंजेस करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, एंड अगेन देयर इज एन एडमिन टू कीप अ क्लोज आई। तो आई थिंक these are the measures that can be taken. And LAN yeah, definitely is the center of esports. Like esports is supposed to be played on Absolutely. LAN. Matlab, yes,
वो कोविड की वजह से there were issues. But talking about esports in general and talking about unofficial tournaments also, like you mentioned, how about we talk about the growth of BGMI esports? How has it been the last 1 year? We've seen a lot of tournaments Absolutely. coming. It's definitely the biggest game, but how is it But I going? mean, it started Aurum. from like the first ever event. It was a influencer event, जो भी the first Yeah, launch launch party. हाँ, party. so it Launch started party. as an influencer event, but after that we have seen a lot of events happening. Basically, जो पहले events होते थे before the ban, उनका price pool it was approximately 50,000, किसी का 1 lakh, किसी का 2 lakhs. इससे ऊपर हम rarely देखते थे. But now the price pool have, I would say, they have increased up to 10 times. तो जो 5 lakh का है अभी वो 50 Yeah, lakh का हो गया है. Then there are events worth 1 CR price pool also. Krafton has recently announced their roadmap for 2022. उसमें they have declared that this year the price pool will be 2 CR for the whole year. 2 CR is a Yeah, big amount yeah, for big all of amount. us, yeah, because we it's have a never huge seen amount. Yeah, any title in India, game title in India, distributing such a big prize pool. Then Yeah, uh, big prize yeah, pool. Yeah, that's this true. recent land that is happening right now, that is BGMS, the Master Series. Uska bhi, I Master heard the total Series. prize pool is 2 CR, which is divided among different stages. Uska league stage mein, then finals, and it is a LAN which will go on for approximately a month, I think. जितना मुझे पता है. Yeah, and damn. it is being Star telecasted on Sports Star also. Sports as well, right? Yes, that's also As a the very big thing. first time ever, I guess the any event has been Absolutely, and we telecasted we can on see television. Yeah, big companies like Swiggy and Hyundai, and then Spotify and all, Yeah, yeah, partnering yeah. up. So I Yes, think yes. involvement of such brands will make this game much bigger. In and it's such a Yeah, big thing. Star Sports, for example, मतलब Yep. हम तो क्रिकेट के हाइलाइट्स देखते थे बैठ के स्टार स्पोर्ट्स पे एंड अब हम Yeah, बीजीएमआई देखेंगे स्टार स्पोर्ट्स पे. yeah, That's like the biggest thing ever. yeah. And moving on, what happened? There was another game that PUBG launched very recently, which was PUBG New State, and there was a lot of hype around it. I've played it a lot personally, but it didn't do as well as everybody expected it to do. It didn't keep up with the other game at Yeah. all, and it's just, matlab, it got sidelined a little bit. What do you think were the issues behind that? What Yeah. happened? Yeah. First of all, game's name is New State Mobile. It's not PUBG New State. I don't know, for some reason they changed the name after the launch. So क्या reason था पता नहीं. But game, वो जो game था, it was hyped up too much, and expectation बहुत ज़्यादा थे लोगों के. It's a futuristic game. I guess you might have played Yeah, it. yeah, तो yeah. पहली चीज, उसका ग्राफिक्स इतना ज्यादा हाई है, लाइक इट इज कंपेरेबल, लाइक दे वांटेड टू रेप्लिकेट द पबजी पीसी टू मोबाइल डिवाइसेस. तो कोई भी गेम जिसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए, लाइक 8-12 GB रैम या लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, तो इतना मासेस में वो खेला जाना पॉसिबल नहीं है, हाँ. बिकॉज 90% पीपल डोंट हैव हाई एंड डिवाइसेस. बहुत कम लोग के पास होता है. तो that's why the lighter version of the games are pretty successful. Yeah, Even yeah, पहले तो PUBG. बहुत पहले तो उसका भी, हाँ हाँ, Yeah, वही, that's what I was coming to. Even on PC it's available as far as I yeah, remember. yeah. बंद हो गया. I think it's नहीं है अभी. It's not there now. हाँ हाँ. Based on the और औरम updates. भाई, what do you think about New State? आपके क्या ओपिनियन है? आपने खेली तो हाँ, होगी. आई मीन जब लॉन्च हुई थी तब मैंने खेली थी. ज्यादा दिन मुझे टाइम नहीं मिला था खेलने का, Mm, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज आल्सो mm, competing with my team. So yeah. I didn't get Yeah, so many chances to get my hands on it. But जो जितना मैंने खेला उसके हिसाब से I liked the game, and because I'm already Mm, playing a game of a similar nature, बिल्कुल exactly same है, थोड़े बहुत differences हैं. तो and also there were tournaments, तो I think that time it was not very necessary for me yeah, to it's just check it out properly. yeah, you never got Yeah, into it but otherwise totally it was good. at all. And agar if you talk about the competition with BGMI, I think BGMI holds a lot of player base as of now, and it's Yeah, yeah, very hard 100%. for that game to take over. So abhi to I think that is the truth. Actually, क्या था उस गेम के अंदर ना, the game mechanics were a bit different when it was launched. जो मूवमेंट वगैरह है, कैरेक्टर हाँ मूवमेंट एंड हाँ ऑल, इट हाँ. वाज नॉट लाइक बीजीएमआई या फिर पबजी मोबाइल की तरह. वो नहीं था, थोड़ा अलग था. तो क्या हुआ, लाइक अगर मैं बीजीएमआई खेल रहा हूँ तो मैं न्यू स्टेट खेलने गया तो मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था.
खेलना। हाँ तो लॉट ऑफ हाँ पीपल, लॉट ऑफ रिव्यूज आर देयर, लाइक दे आर आस्किंग कि इसको थोड़ा मूवमेंट को बीजीएमआई जैसा कर दो या पबजी मोबाइल जैसा कर दो। तो देयर वाज अ मूवमेंट अपडेट आई थिंक एक आध महीने के बाद, तो इट मेड सिमिलर टू दी प्रीवियस गेम। तो अब गेम सेम टू सेम हो गई है, तो फिर लोग फिर वहां पे क्यों जाए? बिकॉज अब हाँ अभी एक गेम में 2 साल 3 साल 4 साल आपने इन्वेस्ट किया है, लाइक मैं कैजुअल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। यू इन्वेस्टेड योर टाइम मनी, अकाउंट अपग्रेड किया है, इवन यू गॉट द स्किन्स एंड ऑल इन्वेंट्री, उसके लिए तो या बहुत क्रेज है गेम के अंदर। तो फिर वो सब छोड़ के व्हाई एनीबॉडी वुड गो एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो? या तो वन एंड वन वो ऑफ बहुत बड़ी बात रहती है कि स्किल लेवल भी तो तुम्हें, यू वांट टू मेंटेन योर स्किल लेवल, राइट? इफ यू ऑलरेडी गुड एट अ गेम, you'd prefer playing that game over something that you'll have to learn like again totally. यस। तो जो मूवमेंट 100 अपडेट के बाद उस गेम के अंदर ऐसा कुछ नया नहीं था कि लाइक मैं अभी बीजीएमआई छोड़ के वो खेलने क्यों जाऊं व्हेन द सेम सिमिलर थिंग इज अवेलेबल yeah ओवर हियर। तो देन व्हाई शुड आई गो देयर? दैट्स वन ऑफ द रीजंस, वो एक रीजन ऑल्सो हो सकता एक है गेम कि के लॉन्च होने के बाद ना इट टेक्स सम टाइम फॉर द ई स्पोर्ट्स सीन इट टू टेक्स सम डेवलप। मैं टाइम। अगेन यस, मैं ई स्पोर्ट्स यस, के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ 100%. बिकॉज यस, यस। हाँ हम हाँ तो compete करने के लिए बने हैं। तो अगेन एक गेम के लॉन्च होने के बाद इट टेक्स सम टाइम, बट देयर इज अ ecosystem in place for BGMI which is still developing, no doubts on that, and अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बट एक है बेसिक, एक जो बोल सकते हैं एक थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं हम लोग, वो है। तो उसको छोड़ के BGMI बीजीएमआई में में हाँ एब्सोल्युटली, तो उसको छोड़ हाँ के जी हम लोग अभी यस, डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम नहीं तो हमें खुद वेट करना पड़ेगा। 100%. ठीक है, अभी वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है इस टाइम पे कि कब वो उसका, कब उसमें वो उतना प्लेयर बेस आएगा, कब उसके भी इवेंट्स आने शुरू होंगे, कब यस, वो सब होगा। तो उसके लिए अगेन वो वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हाँ मुझे लगता है हो जाएगा। तो 100%. इट्स हाँ नॉट वर्दी टू फॉर अ बीजीएमआई प्लेयर टू स्विच, बट हाँ, अगर कोई अदर टाइटल्स से आना चाहता है या ही वांट्स टू स्टार्ट अफ्रेश, तो वो कर सकता है। उसके लिए आई थिंक वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ओके, बिकॉज या बीजीएमआई में द हाँ जी, कंपटीशन is increasing, way too much. वेरी is हाई, increasing day by वेरी day, हाई, and या, it's on another level right now. यस, Yeah, you're competing. If you're a new player, you're obviously competing with people that have been playing for the last टू two, थ्री three years years. absolutely. So, तो वो एक सबसे yeah, बड़ा टास्क रहेगा। बट अगर आप किसी और टाइटल से आ रहे हो एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो आई मीन यू आर अ पबजी फैन और बीजीएमआई फैन एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड यू वांट टू बिल्ड योर करियर, देन आई थिंक वो एक ऑप्शन सूटेबल रहेगा उन प्लेयर्स के लिए। सूटेबल है। Uh, Aurum, I want to end this segment, this podcast, with one last question to you. And this question is actually very important to me because we're in kind of like similar boats, just in different games. So, what qualities and traits do you look for players? Like, do you look for in players? What is when you see a player and you examine them and you see their different qualities and traits? What are some things that you genuinely look for in players? I mean, before I talk about the qualities and traits, I would like to mention that we would be looking at the players from the grassroots level this time. So, and there will be a very big announcement related to that, which will come very soon. So, let's just stay tuned and watch it. But abhi ke liye, assuming that the team that I'll get, they will be they'll not be having that much experience, or they might lack experience. I'm not sure about it, but I'm just assuming it. So एक्सपीरियंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली आई एम देयर टू हेल्प देम आउट। मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना जितना मेरा आज तक का है, मैं आई विल बी शेयरिंग इट विद देम। बट मैं जो चीज़ों को लुक आउट करूंगा, दैट इज दे शुड बी मैकेनिकली स्ट्रांग, because that is Yeah, mechanical skills are something which takes time to develop. That is not something that you develop overnight. For example, your aim, yeah, या, right? आप आज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, यू गो टू योर ट्रेनिंग मोड एंड देन यू डू इट continuously, you keep doing it for days and days, then after a few months you will find a change in yourself. जनरली ये एक प्रोसीजर रहता है। yeah, सेम विद यस, रिफ्लेक्सेस एंड मूवमेंट्स का तो उतना नहीं बोलूंगा मैं, बट रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिफ्लेक्सेस, कुछ तो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग अपना रिफ्लेक्सेस भी बिल्ड करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। प्रैक्टिस कर करके हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मसल मेमोरी एट द एंड ऑफ द डे। and it's a given, right? As a professional player, to have good aim and to have good reflexes, these are some things that you genuine. That's वो तो मतलब वो तो होना होना ही ही चाहिए, चाहिए, कहते हैं कि मतलब बाकी तो प्री हाँ रिक्विजिट्स जिसे हम बोलते हैं। तो
they should हाँ not जी. be just sound, they should be strong, mechanically very very strong in this. क्योंकि अब we are in 2022, so it's almost like 3 years after the launch of the game. BGMI ka it's only 1 year, but as we know, before the ban Yeah. also the four game years. was there, Okay, right? no, 4 years. So the player base is almost Yeah. the same. So right now Yeah. what I'm expecting is कि basic drills आज की डेट में सब players को मालूम है कि क्या करना है. हाँ एडवांस जी. ड्रिल्स के बारे में हम बात करेंगे जब वी विल हैव अ टीम इन प्लेस, बट बेसिक ड्रिल्स आई थिंक सबको मालूम है. तो वो बेसिक ड्रिल्स को अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो अच्छे से, एंड आप आपके एम इज इट्स लेजर शार्प, आपके रिफ्लेक्सेस, you can literally turn 180 degree around and kill another enemy. जैसे I am sure it happens in COD Yeah. Mobile also, that you may face Yeah, an yeah. enemy. I mean, Yeah. you have just killed an enemy and then you have to rotate 180 degrees Turn and around. do it. Yeah. तो वो चीज़ों में आई थिंक दे शुड बी वेरी वेरी साउंड एंड स्ट्रॉन्ग. एंड उसके अलावा इफ दे हैव अ गुड गेम सेंस ऑल्सो, देन इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक, अगर वो है तो. एंड it will save a lot of time in strategizing and reading the opponents when we'll act Yeah. as a team, and when we'll design the strategies for the team. तो अगर ये सब चीज़ें मेरे पास पहले से हैं, including the game sense, I think that will increase our efficiency a lot. एंड Yeah. कम टाइम लगेगा हमें जल्दी रिजल्ट्स डिलीवर करने के लिए, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है अभी. तो मेरा तो वही Yeah. टारगेट रहेगा कि But ऐसी एक टीम मैं हेल्प करूं बिल्ड करने में जो इन सब चीज़ों में अच्छी हो. But as a coach, I like that. Ki you've come up with, like an answer that I need players who are strong, and I can turn them. I can keep their game sense up. I can teach them the game, but they should be at the top of their mechanical game Exactly. from the start. That is Mechanically, something which is very exactly. Like important. mechanically, they should be strong. Technically, I am there to help them out. मेरा जितना Yeah, एक्सपीरियंस है, yeah, बेसिकली आई जस्ट वांट टू क्लब द मैकेनिकल एज वेल एज टेक्निकल पार्ट. एंड वही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हाँ वो अगर आप आप जोड़ अगर रहे आप हो. मैकेनिकली स्ट्रांग हो ना, अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर है गेम को लेके, तो जो एडवांस पार्ट होता है जहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन बिल्ड करते हो, एक वो टीम वर्क जहाँ पे आपका आता है, द कॉल आउट्स एंड द वे यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द गेम, द वॉइस कॉम्स एंड एवरीथिंग, बेसिकली जो एक गेम को आपको Yeah, लेट जोन्स पे ले जाने में हेल्प करता है, विन करने में हेल्प करता है. उस चीज के लिए इट हैज टू बी देयर, द मैकेनिकल पार्ट. तो yeah, सिनर्जी synergy. तो फिर Yeah, हम बिल्ड and the करेंगे. synergy यस, also. एब्सोल्युटली. तो हाँ हाँ. मुझे लगता है कि अगर ये सब मैं कर पाता हूँ अच्छे से, तो वी कैन डिलीवर रिजल्ट्स वेरी वेरी फास्ट. अदरवाइज लेट्स सी हाउ द जर्नी गोस. Yeah, we'll see a lot more of this very soon, and I hope like everybody's waiting for that announcement to come whenever it does. And but on this is the end of the podcast. Thank you so much, the two of you, for joining me. आज मेरे को लग रहा है कि अब मैं थोड़ा BGMI खेलता हूँ जाके, क्योंकि मैं अब थोड़ा excited हो गया हूँ कि सुन सुन के. But thank you so much for coming. I hope you guys enjoyed, and I hope the people watching as well enjoyed. Please let us know if you want us to talk about this more in another episode. Thank you guys. बाय. Cheers. Thank you.